everybody in Enlight Education Videos. My name is Ankit Patel, and in this video we are going to study about plant tissue, right? First of all, we'll deal with classification of plant tissue. That means what are the different kind of plant tissues present in all the plants, and then we are going to study about meristematic tissue, right? So let's start the topic without wasting much time. Plant tissue, right? So whole plant tissue is actually divided into two types of tissue, and they are, first of all, let me write plant tissue. Plant tissue. Plant tissues, they are of two types. One is meristematic tissue, right? And another one is permanent tissue, right? Meristematic tissue are those tissues which are having capacity of cell division, right? And permanent tissue cannot divide further. I mean, they cannot divide, right? But it is the meristematic tissue which get transformed into permanent tissue. And once transformation is occurring, then permanent tissue, I mean cells of permanent tissue cannot divide further. Understood? Now let's see what are the different types of tissue in meristematic tissue. There are two types of tissue in meristematic tissue. One is primary and second is secondary. Now इसका नाम primary और secondary क्यों है? Because it depends on what kind of growth it is providing. What kind of growth it is providing. See, we have discussed that meristematic tissue is a tissue in which cells are continuously undergoing cell division, right? So cell division is helping in cell growth. I mean growth of the whole plant, not cell growth, but growth of the whole plant. पूरे plant की growth में help करता है meristematic tissue. तो primary growth के लिए primary meristematic tissue help करता है. Secondary meristematic tissue is helping for secondary growth. Understood? That's why they are named so. The primary में भी दो type के tissues होते हैं. Apical and intercalary. Understood? और apical में भी दो type के tissues होते हैं. They are shoot and root. Understood? Now we will study about this in detail in this video only. Right? Okay. In secondary, just one type of tissue is there, that is cambium. Understood? Or it is also called as lateral meristematic tissue. Understood? And again, these are of three types. They are fascicular or vascular cambium, then interfascicular and cork cambium, right? So this is about different type of meristematic tissue. Right. Now let's see what are the different types of permanent tissue. Permanent tissue are of two types. Simple, complex. Right. Now before going to study further in simple and complex, let's study about what exactly is tissue. What exactly tissue is. Every year, mass of certain cells are used to call it as tissue. But tissue is exactly a group of cells which are serving for same purpose, which is serving function or which is functioning to serve same purpose. Understood? एक ही कोई पर्पस के लिए ग्रुप ऑफ सेल्स कुछ काम कर रहे हैं, तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग बोलेंगे एक टिश्यू. Understood? It is not just a mass of cell, right? Earlier टिश्यू को हम लोग, I mean सेल मास को हम लोग टिश्यू बोलते थे, right? क्योंकि हम लोग जहां से हम लोग ने पहले सेल्स का एक ले लिया था ऑर्गन में से, एक छोटा सा सेल मास लेते थे, तो वो एक टिश्यू हम लोग बोलते थे उसको. टिश्यू का नाम तब से आया है, right? But now what exactly is tissue? Group of cells functioning to serve same purpose, right?
सो दिस इज नॉट डेफिनेशन, एक्चुअली ये मैं अपने से बना के बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ आई मीन मैंने जो जितना टिश्यू के बारे में पढ़ा है और मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक टिश्यू के बारे में अबाउट आई मीन व्हाट आई हैव read the literature about tissue in different books, तो ये मुझे लगा कि ये टिश्यू के लिए एग्जैक्टली सेम सेंटेंस है, टिश्यू का मीनिंग के लिए एग्जैक्टली सेम बैठ रहा है, ठीक है। और आप लोग जब ये पढ़ लोगे तो आप लोग को भी पता चल जाएगा कि हाउ दिस explanation, short description is fitted best for tissue. अब प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं तो परमानेंट टिश्यू, और उसमें भी परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं तो दो टाइप के टिश्यू है, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अंडरस्टूड? नाउ सिंपल टिश्यू क्या है कि यहाँ पर स्ट्रक्चरली सारे सेल्स आर आइडेंटिकल, ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल, नॉट ओनली स्ट्रक्चरली बट फंक्शनली ऑल्सो ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल। यहाँ पर सारे सेल्स एकदम आइडेंटिकल है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर दोस टिश्यू इन विच different cells, I mean different types of cells are there and all of them are performing different kind of functions. They are structurally and functionally different from each other. Understood? तो ये difference है, ये basic difference है simple permanent tissue and complex permanent tissue. Obviously both of these permanent tissue have developed from the mesenchymal tissue. ये सब हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है, कैसे mesenchymal tissue से permanent tissue बनता है, right? When we discuss about mesenchymal tissue. Okay. अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी क्लासिफाई कर लेते हैं कौन से अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले मैं बता देता हूँ कि कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में जिसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, जिसमें कोई एक टिश्यू है जिसमें सारे सेल्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, या फिर कोई एक टिश्यू है जिसमें बोयेंसी प्रोवाइड करने का फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। बोयेंसी प्रोवाइड करना मतलब सपोज एक्वेटिक प्लांट है तो उसके लीफ को अगर वाटर के सरफेस से ऊपर रखना है, राइट, तो दैट टिश्यू, तो उसमें लीफ में ऐसे कुछ टिश्यूज होने चाहिए जो बोयेंसी प्रोवाइड कर सके, जिसके वजह से वो लीफ ऊपर तक आ सके। अंडरस्टूड? उसमें एयर कैविटीज होनी चाहिए, तो वो एक अलग टाइप का टिश्यू होता है। तो परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू में ये अलग अलग टाइप के जो फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं ना, वो उसको बोलते हैं पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा आर दोस टिश्यूज व्हिच शोज varieties of different functions, right? मतलब पैरेन्काइमा सेल्स में भी, पैरेन्काइमा टिश्यूज में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के टिश्यूज है जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, राइट? सो फर्स्ट इज पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा के अंदर कुछ टाइप के टिश्यूज को हम लोग पैरेन्काइमा टिश्यूज ही बोल देते हैं, फिर से पैरेन्काइमा, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई बट इट इज कॉल्ड पैरेन्काइमा टिश्यू। जो फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है उनको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। अंडरस्टूड? और ये मैंने जो बोयेंसी के बारे में बात की उस टाइप के पैरेन्काइमा टिश्यू को बोलते हैं एरेन्काइमा। अंडरस्टूड? तो ये अलग अलग टाइप के पैरेन्काइमा टिश्यू है। अंडरस्टूड? और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के पैरेन्काइमा टिश्यू है, बट वी विल नॉट स्टडी अबाउट देम इन दिस वीडियो, राइट? चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज कोलेन्काइमा। Collenchyma is a tissue which is providing mechanical strength to the plant by providing flexibility to the different organs. For example, stalk of leaf. Understood? तो ये collenchyma ऐसा टिश्यू है जो एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट, बाय बीइंग टर्जिड। तो इसके सेल्स टर्जिड होते हैं और इसकी वजह से पूरे ऑर्गन को या फिर वो प्लांट के पार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। अंडरस्टूड? अगर कई पर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो रिजिड नहीं होने चाहिए, इफ दे आर रिजिड दे कैन बी ब्रोकन डाउन, और लीफ स्पेशली होता है तो लीफ का स्टॉक ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी फ्लेक्सिबल बिकॉज लीफ मूविंग होना चाहिए विंड के साथ। अंडरस्टूड? तो उसके सरफेस में जो एयर है वो चेंज हो सके, अदरवाइज वो इतना जल्दी से चेंज नहीं होगा इफ विंड इज नॉट फ्लटरिंग, आई मीन इफ लीफ इज नॉट फ्लटरिंग विद द विंड। अंडरस्टूड? तो स्टॉक में कोलेन्काइमा चाहिए, इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू दी स्टॉक ऑफ लीफ। अंडरस्टूड? तो कोलेन्काइमा होता है, कोलेन्काइमा इज लिविंग टिश्यू, राइट, इट इज अ लिविंग टिश्यू। हम लोग पढ़ेंगे बाद में कोलेन्काइमा के बारे में इन डिटेल, राइट। देन नेक्स्ट इज और एक टाइप का टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है,
which is providing mechanical strength, but they are dead cells. And they are providing rigidity to the tissue, rigidity to the organ of the plant, right? तो ये flexibility provide कर रहा है, तो sclerenchyma rigidity provide कर रहा है, right? And these are living cells, while sclerenchyma are dead cells. They are sclerenchyma. Understood? They are sclerenchyma. So three types of simple permanent tissues are there: parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Sclerenchyma में दो टाइप है, एक है sclerids और एक है sclerenchyma fibers. बट यहाँ पर हम लोग ठीक है, बहुत सारा स्पेस नहीं है तो यहाँ पर लिखते नहीं हम लोग, ठीक है? So this is about simple permanent tissue. अब complex permanent tissue है, complex permanent tissue को लिखने के लिए यहाँ पर मैं collenchyma और sclerenchyma को रब कर दूंगा, but you will see the whole video to understand it, right? You will not just see the picture. और आप लोग अभी ये इसका स्क्रीनशॉट नहीं लोगे, ठीक है? आपको लिखना है तो आप लोग लिख लो नोटबुक में, just note it down. Understood? Now let's see what are the different type of complex permanent tissue. One is xylem and one is phloem, right? We know that xylem is responsible for transport of water and minerals in the plants, right? They have unidirectional flow of water and minerals, right? And phloem is the conducting tissue or complex permanent tissue. Yes, complex permanent tissue is also called conducting tissue. Why? Because both of these different type of tissues helping in conduction of something, right? Conduction means transportation of something. And phloem is helping in transportation of food, organic food, right? Especially sucrose. Understood? Because we know that sucrose is transported. If there are other organic chemicals are transported in phloem, we don't know much about it, but we have some hypothesis about transportation of sucrose in phloem. That we'll study later, much later, right? Not even in this chapter. Okay. But yes, in 11th standard we'll study about it. In 11th chapter. Okay. So there are two types of complex permanent tissue or conducting tissues, xylem and phloem, for transport of several things within the plant, right, which are very, very important for different parts of plant, right? Again, in xylem and phloem there are different parts, but right now we are not going to study about different type of cells in xylem and phloem. They are having different type of cells within a tissue. मैंने जो parenchyma में आपको बोला कि तीन टाइप के अलग अलग टिश्यू होते हैं, तो जहां पर क्लोरेंकाइमा टाइप का parenchyma होता है वहां पर सिर्फ क्लोरेंकाइमा सेल्स होते हैं. लेकिन अगर xylem की बात करें तो xylem में कोई एक जगह पर सपोज ट्रैकिया है, एक ही टिश्यू में ट्रैकिया, xylem फाइबर, xylem parenchyma, tracheids, ये सब कुछ देखने को मिलता है, right? Means different types of cells is there within a tissue. Understood? Here within a tissue, same type of cells will be there. Understood? Are there? Not will be there, are there. Understood? So this is simple permanent tissue, parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. And never get confused between chlorenchyma and collenchyma. Chlorenchyma are the type of parenchyma which is performing, in which cells are performing photosynthesis, right? While collenchyma are those kind of tissue which are providing flexibility to different parts of plants, right? For example, stalk of trees. And in complex permanent tissue, there are two type of tissues, xylem and phloem, right? And among these two tissues, there are different type of cells within a tissue. Understood? So this is about different types of plant tissues which are very, very important to learn. First of all, you should know about all this thing, right? If you are knowing all this thing, then it is easier to learn different type of tissues. And remember this, I know this is not there in your syllabus for this year, right? I am making this video in 2020-21 when COVID-19 pandemic is there, is existing, but you need to know, though it is not there in your board exam, in school exam, but it will be there in NEET exam, right? And I am making this video for preparing for NEET exams. Understood? So you must know about all these different type of tissues. This is one of the very basic thing in botany. Now let's see what are the mesenchymal tissues, right? Mesenchymal tissues are having those cells which undergoing repeatedly cell division, right? They are continuously going cell division. They don't have any other function to perform but just to divide the cell and differentiate some of these cells, right? Some of the cells which have formed through division, right? So these cells are continuously dividing and some of these cells are undergoing differentiation process. But once they are undergoing differentiation process, they don't divide further and they acquire a specialized function to become cells of permanent tissue.
Understood? Let me repeat this sentence again. Let me repeat this information again. Okay. Meristematic tissue are consisting of those cells which are undergoing repeated cell division, and some of these cells are undergoing differentiation process by losing capacity of dividing further, and they acquire some specialized function to become permanent tissue. Understood? So permanent tissue are those tissues which cannot divide and have acquired already a specialized function, right? So some of these cells are undergoing differentiation process. Some of the meristematic cells, or I should say meristems, right? Some of the meristems are undergoing differentiation process to become permanent tissue by losing capacity of cell division and acquiring specialized functions to perform, right? Now, let's come to meristematic tissue again and meristematic cells again. So these cells are continuously undergoing cell division. Now, because of this cell division, plant tissues or plant organs are growing. Not plant tissues, but plant organs are growing, right? Plant organs, roots, stems होते हैं, वो continuously grow होते हैं because of this division. Understood? Because of division से क्या होगा? Number of cells increase होंगे. और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, फिर ये सेल इलोंगेट होंगे, फिर और सेल ज्यादा डिवाइड करेंगे, तो ये जो नंबर है सेल्स के बढ़ते जाएंगे विच इज अल्टीमेटली गोइंग टू इलोंगेट प्लांट ऑर्गन्स, राइट? ओके, so this is about meristematic tissue. Now let's study about different types of meristematic tissue. First we'll study about primary meristematic tissue. Primary meristematic tissue are those tissues which are responsible for primary growth of the plant. अब प्राइमरी ग्रोथ किसको बोलेंगे? तो एक एक्सेस में उसका लेंथ जो इंक्रीज होता है, दैट काइंड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, जिसमें प्लांट का लेंथ बढ़ता है, राइट? इट इज जस्ट इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट. अंडरस्टूड? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, राइट? प्राइमरी ग्रोथ में लेकिन हम लोग ग्रोइंग ऑफ ब्रांचेस भी इंक्लूड करते हैं, फ्लावर्स है, फ्रूट है. Fruit, the nature of fruit formation is different thing, but formation of flower, formation of leaf, all this comes under primary growth, right? Because all this grows through axillary bud, and axillary bud is developing from this meristematic cells, right, which is responsible for primary growth of the plant, right? तो वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं when we will discuss about different types of primary meristematic tissue, right? तो let's study about primary meristematic tissue. तो दो टाइप के प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो मैंने यहां पर पहले आप लोग को बोर्ड पे ये साइड में लिख के बताया, राइट? व्हाट आर दोस टू टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? दे आर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो अब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? Primary meristematic tissue are those tissues which are present. Apical meristematic tissue are those tissues which are present at the apical regions. That is root apex and shoot apex. Understood? दो apex होते हैं प्लांट में, root apex and shoot apex. तो ये root apex में कौन सा meristematic tissue होता है? Root apical meristematic tissue, and shoot apex में shoot apical meristematic tissue, right? तो अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं? आप लोग डायग्राम में अभी देख सकते हो कि हाउ दे आर लोकेटेड इन द रूट, राइट, एंड हाउ दे आर लोकेटेड इन द शूट आल्सो. अंडरस्टूड? तो रूट में कैसे किस जगह पर होते हैं? अब यू कैन इमेजिन नाउ इफ दिस सेल्स आर अंडरगोइंग डिवीजन, इफ सेल नंबर इज इंक्रीजिंग, अंडरस्टूड, और ये सेल्स इलोंगेट भी होते हैं, राइट? तो सेल इलोंगेट होते हैं, डिवीजन होते हैं, इसकी वजह से इसका लेंथ बढ़ रहा है. अंडरस्टूड? प्लांट का लेंथ बढ़ेगा. Understood? So this is about root apical meristematic tissue. Same for the shoot apical meristematic tissue, because of which length of the plant is growing. Understood? अब क्या होता है ये कभी-कभी क्या, not कभी-कभी but हर बार ऐसा होते रहता है. अब होता क्या है यहाँ पर देखो कि कुछ सेल्स डिवाइड करते रहते हैं और इसमें से कुछ सेल्स डिफरेंशिएट भी हो जाते हैं, फॉर्मिंग परमानेंट टिश्यू. अंडरस्टूड? तो आप मान लो कि कुछ एक टिश्यू है जिसमें से कुछ 5000 cells है, मेरिस्टेम्स है, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स है in apex of root. Understood? Apex of shoot ले लेते हैं, चलो apex of shoot will be better to understand that. ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो गया कि जो ये ग्रो होते रहता है, ठीक है? और अब 5000 मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ठीक है? 5000 मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, इसमें से कुछ 2000 सेल्स डिफरेंशिएट हो गए, right? They got differentiated, and this differentiate 2500, चलो out of 5000 2500 डिफरेंशिएट हो गए, नहीं चलो 2000 डिफरेंशिएट हो गए, आई एम सॉरी 2000 डिफरेंशिएट हो गए, ठीक है? आउट ऑफ 5000 2000 इज डिफरेंशिएटेड, तो अभी 3000 मेरिस्टेमेटिक सेल्स बचे हैं.
और अब जो ये 2000 परमानेंट, अब ये 2000 डिफरेंशिएटेड सेल्स है, दे विल फॉर्म परमानेंट टिश्यू। और कितने सेल्स अभी बाकी मेरिस्टेम्स में 3000 सेल्स आर स्टिल रिमेनिंग, राइट, जिसमें से 500 सेल्स है वो कुछ नीचे रह गए हैं। दे आर नॉट प्रेजेंट एट दी शूट एपेक्स नाउ, अंडरस्टूड, दे आर नॉट प्रेजेंट एट दी शूट एपेक्स। तो शूट एपेक्स में कितने हैं, सिर्फ 2500 है, और 500 जो है वो नीचे रह गए, अंडरस्टूड, बिलो दी परमानेंट टिश्यू, बिलो दी न्यूली फॉर्म परमानेंट टिश्यू। तो ये जो अब 500 सेल्स रह गए नीचे लगभग, वो क्या करेंगे कि वो उसमें से एक्सिलरी बर्ड बनेगा। क्या बनेगा, एक्सिलरी बर्ड। जब भी प्लांट, कोई भी प्लांट ऑर्गन ले ले, अगर हम लोग शूट ले ले, स्टेम ले लेते हैं या फिर रूट ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, जहां से ब्रांचेस ग्रो होते हैं। अगर स्टेम है तो लीव्स भी ग्रो होगा, अंडरस्टूड। तो ये जो ब्रांच, ये एक्सिलरी बर्ड है, ये ऐसे फॉर्म होता है। एंड दिस एक्सिलरी बर्ड, ये पूरा एक्सिलरी बर्ड का जो क्लस्टर होता है ना, वो एक नोड बन जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड। तो क्या होगा कि ये जो सेल्स रह गए, एपिकल मेरिस्टेम्स के सेल्स जो रह गए हैं, उससे नोड्स बन जाता है, उसके क्लस्टर का नोड बन जाता है, और यही एक्सिलरी बर्ड से फिर ग्रो होगा, नए ब्रांचेस, नए लीव्स ग्रो होते हैं, अंडरस्टूड। तो दिस इज अबाउट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसा नाम है ना वैसा ही है। दिस हियर इन दिस टिश्यू मेरिस्टेम्स आर प्रेजेंट इंटरकैलेटेड, मतलब कई पर स्कैटर्डली प्रेजेंट है, राइट, दे आर प्रेजेंट इन अ स्कैटर्ड मैनर विदिन एन एक्सेस ऑफ शूट और रूट। और इसके वजह से ये इंटरकैलेटेड क्या है कि बीच बीच में से प्लांट को ग्रो कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर से ग्रो होते जाएगा, राइट, फ्रॉम द एपेक्स ओनली इट विल ग्रो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट बल्कि यहां पर इंटरनॉड का भी इलॉन्गेशन होगा, and that is because of intercalated meristematic tissue, understood। so दो टाइप के टिश्यूज यहां पर हम लोग ने पढ़ लिया प्राइमरी ग्रोथ में, ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। एक है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अंडरस्टूड। जैसा नाम है वैसा ही उसका प्रेजेंस है, इंटरकैलरी मतलब स्कैटर्ड, इन स्कैटर्ड वे इट इज प्रेजेंट विद इन दी ऑर्गन, अंडरस्टूड, वेदर स्टेम ऑर्गन और रूट ऑर्गन, इवन ब्रांचेस में भी प्रेजेंट होता है, अंडरस्टूड। सो दिस इज अबाउट primary meristematic tissue. Now coming to the secondary meristematic tissue. अब नाम क्यों secondary meristematic tissue है? Because the growth it is providing is secondary growth. अब ये secondary growth क्या होता है? तो secondary growth is a kind of growth in which plant girth is increasing instead of length. Girth of the organ is growing. Stem होगा वो woody होगा, ठीक है, उसका girth increase होगा, अंडरस्टूड। जो हम लोग मैंगो ट्री देखते हैं, फिर एप्पल ट्री देखते हैं, बेनियन ट्री देखते हैं, उसमें हम लोग को मालूम है कि स्टेम कितना थिक होता है। वी कैन नॉट फाइंड दैट मच थिक स्टेम इन रोज प्लांट, वी कैन नॉट फाइंड दैट काइंड ऑफ स्टेम इन दिस पी प्लांट, अंडरस्टूड। तो सेकेंडरी ग्रोथ हर तरीके के प्लांट में नहीं मिलते हैं, कुछ ही तरह के प्लांट में मिलते हैं। मस्टर्ड प्लांट में भी हम लोग ऐसा गर्थ नहीं देखते हैं, वुडी स्टेम नहीं देखने को मिलता है, राइट। तो आफ्टर सर्टेन ग्रोथ ऑफ प्लांट स्टार्ट्स इट्स सेकेंडरी ग्रोथ। जैसे अगर मैंगो प्लांट के बारे में बात करो, तो मैंगो का प्लांट अगर जैसे हम लोग ने सीड को सो किया है, तो कुछ टाइम तक उसका सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ होगा, उसका स्टेम जो है वो बाकी हर्बेशियस प्लांट की तरह उसका स्टेम भी हम लोग ग्रीन देखने को मिलेगा। इट इज फ्लैशी इंस्टेड ऑफ वुडी, बट कुछ हाइट तक जब बड़ा हो जाएगा, बाद में उसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी स्टार्ट होगा। स्टेम बिकम्स वुडी, स्टेम बिकम्स ब्राउन इन कलर। अर्लियर जो ग्रीन कलर का था सिंथेटिक स्टेम था, अभी वो फोटोसिंथेटिक नहीं रहेगा, अंडरस्टूड। नाउ इट इज कंप्लीटली चेंज्ड। और जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा मैंगो प्लांट, वैसे वैसे उसका वुड का स्टेम का गर्थ भी इंक्रीज होता जाएगा, एंड देन इट बिकम वेरी रॉक सॉलिड, अंडरस्टूड। तो दिस इज बिकॉज ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ में भी अलग अलग टाइप के टिश्यू, एक टाइप का टिश्यू होता है जिसको लैटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं और कैम्बियम भी बोलते हैं, और लैटरल कैम्बियम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अलग अलग टाइप के होते हैं, अंडरस्टूड। तो दिस लैटरल मेरिस्टेम इज हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट, स्टेम एंड रूट, अंडरस्टूड, दोनों में हेल्प कर रहा है, अंडरस्टूड। चलो इसमें भी तीन टाइप के अलग अलग देखते हैं, कौन से होते हैं। एक होता है वैस्कुलर और फैसिकुलर। वैस्कुलर कैम्बियम इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें से सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम ग्रोथ होता है,
अंडरस्टूड? ये सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम क्यों क्या होता है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, राइट? We will study about secondary growth in the end of this chapter, and we will study about what is secondary xylem and secondary phloem in this, right? और ये कैम्बियम जो है डिफरेंट टाइप्स के कैम्बियम है वो भी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, नॉट इन दिस वीडियो, राइट? ओके, क्योंकि आपके लिए ये चीज बहुत नई नहीं है, तो we will study about this later. But we need to know that what we call as cambium is actually type of lateral meristem, right? फिर एक कॉर्टेक्स रीजन में कैम्बियम होता है. I mean, whole layer of cambium is present, right? When secondary growth starts, तो एक cortex region में भी एक पूरा layer होता है cambium का, जिसमें से secondary cortex growth होगा. Understood? So secondary cortex, I mean, एक cork cambium होता है, cork cambium, और I should say cortex में cambium का एक layer होता है, फिर fascicular cambium होता है, और कभी-कभी क्या होता है कि vascular bundle के बीच में भी एक layer होता है cambium का, मतलब दो कंसेक्यूटिव, दो एडजेसेंट वेस्कुलर बंडल है. एक वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम सेल्स होते हैं, फिर दूसरे वेस्कुलर बंडल में दूसरे ग्रुप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम्स होते हैं. तो कोई प्लांट में ऐसे होता है. We'll study about all these things later. Understood? So don't worry about this, all this thing, if you have not understood in this video. तो अभी मैं जितना बोलता हूँ आप सिर्फ सुन लो, जितना समझ में आता है ये पर्टिकुलर पार्ट में जितना समझ में आता है समझ लो, ठीक है? तो अलग अलग टाइप, दो एडजेसेंट वेस्कुलर बंडल होते हैं, उसके बीच में वेस्कुलर कैम्बियम होता है, उसके बीच में जो जाइलम और फ्लोएम होता है उसके बीच में वेस्कुलर कैम्बियम होते हैं, जिसको फैसिकुलर कैम्बियम भी बोलते हैं. और दो एडजेसेंट वेस्कुलर बंडल के बीच का जो कैम्बियम होता है उसको इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं. क्यों? क्योंकि दो फैसिकल्स के बीच का कैम्बियम है, दो वेस्कुलर बंडल के बीच का कैम्बियम है, इसलिए उसको बोलते हैं इंटरफैसिकुलर कैम्बियम. ये इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जैसा हो गया, दो स्कूल के बीच की कॉम्पिटिशन, तो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन. तो दो वेसिकल्स के, दो वेस्कुलर बंडल के बीच का कैम्बियम इंटरफैसिकुलर कैम्बियम. अंडरस्टूड? दो नियर बाय, दो एडजेसेंट वेस्कुलर बंडल के बीच में होता है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम. हर दो वेस्कुलर बंडल के बीच में होता है, हर दो एडजेसेंट वेस्कुलर बंडल के बीच में होता है. Understood? So this is about different type of cambium present in plants which is responsible for secondary growth of the plant. Understood? And most of these, जो ज्यादातर जो प्लांट होते हैं जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफ देम आर डाइकोटिलेडनस प्लांट. मोनोकोटिलेडनस प्लांट में सेकेंड बहुत कम प्लांट ऐसे होंगे जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ मिलता है. ग्रासेस फैमिली में तो सेकेंडरी ग्रोथ मिलता ही नहीं है, इट इज जस्ट हैविंग प्राइमरी ग्रोथ, नॉट सेकेंडरी ग्रोथ. डाइकोटिलेडनस फैमिली में, डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में, नॉट फैमिली, डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में हम लोग को सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है, राइट? उसमें से भी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है. Understood? So it is depending on which kind of plant it is, secondary growth may be present or absent. So in this video we have studied about different types of plant tissues, right? Different types of meristematic tissue, different types of permanent tissue. We have just classified these two different type of tissue, and we have studied about meristematic tissue in detail also, right? Not just their location and how they are, but their function also, which is very important, right? So in next video we will meet again, and in that video we will study about permanent tissue, simple permanent tissue, right?